Hello dear children, welcome back to the Knowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 7. Here this is your English grammar book and the name of your book is English Grammar plus Skills Unleashed Workbook. So children, today we are going to do chapter number 13 of your book and the name of the chapter is Direct and Indirect Speech. So let's start with the chapter. So children, direct speech is the mode of narration in which the speaker's words are presented exactly the way they are said by using quotation marks. So direct speech क्या होता है? जब कोई person directly किसी बात को बोल रहा है. So इसमें क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच इज द मोड ऑफ नरेशन, किसी की बात को नरेट करना इन विच द स्पीकर्स वर्ड्स आर प्रेजेंटेड एग्जैक्टली. सो जिस भी पर्सन ने मुझसे वो बात बोली है उसकी बात को एज इट इज प्रेजेंट करना, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट स्पीच. एग्जैक्टली द वे दे आर सेड बाय यूजिंग कोटेशन मार्क्स. सो इन ऑर्डर टू शो दैट द वर्ड्स हैव बीन स्पोकन बाय द स्पीकर, we use quotation mark to show direct speech. So direct speech को show करने के लिए हम quotation mark का use करते हैं. For example, Rahul said we have to return home before it gets dark. So यहाँ पे राहुल एक person है जो एक बात बोल रहा है और वो क्या बोल रहा है कि we have to return home. हमें कौन है? राहुल और उसके साथ जो भी लोग हैं. We have to return home Before it gets dark. तो अंधेरा होने से पहले हमें घर वापस जाना है. सो राहुल ने उस बात को जैसे बोला वैसे ही हमने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया. इन इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच, someone else reports what the speaker had originally said, but without using the speaker's actual words. So अब जब इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं या फिर रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं, we talk about someone else report. हम किसी और के रिपोर्ट की बात हम यहाँ पे करते हैं. What the speaker had originally said. So जो भी स्पीकर ने कहा था, but without using speaker's actual word. लेकिन यहाँ पे हम स्पीकर का जो actual word है उसे यूज नहीं करते हैं. किसमें नहीं यूज करते हैं? In the indirect speech. The example given above could be reported as false. So जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है वो ऐसे है. फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखो लिखा था कि राहुल सेड वी हैव टू रिटर्न होम बिफोर इट गेट्स डार्क. सो इसी सेंटेंस को हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया है और क्या बनता है? राहुल सेड दैट दे हैड टू रिटर्न होम बिफोर इट गॉट डार्क. अब यहाँ पे हमने क्या किया है? राहुल सेड के बाद दैट लगाया है एंड वी की जगह पे हो गया दे have का बन गया had to return home before it gets का बन गया got and dark. So Rahul said that they had to return home before it got dark. Now the following table shows you the differences between direct speech and indirect speech. So यहाँ पे टेबल दी गई है. अब इसमें बताया जा रहा है कि here the table says us explains us about the direct speech और यहाँ पे क्या क्या differences है in the indirect speech we are going to learn. So in the direct speech, quoted speech is placed within inverted commas. So यहाँ पे inverted commas के बीच में हम वो बात लिखते हैं जो इस person ने बोली है. No inverted commas are used here. यहाँ पे in the indirect speech no inverted commas are used. The introducing or reporting verb and the quoted speech are separated by a comma or a colon. So जो introducing या reporting verb है और जो quoted speech है दोनों को comma से या फिर colon से separate किया जाता है. No comma or colon is used here. No conjunction is needed. यहाँ पे conjunction की जरूरत नहीं होती है. A subordinating conjunction such as that is used to join the main sentence with the quoted speech. So यहाँ पे एक subordinating conjunction की जरूरत होती है जो क्या करता है? join करता है main sentence को quoted speech से. There can be two different
tenses in a single sentence. So एक ही sentence में दो तरीके के tense हम use कर सकते हैं. In the following example, the introducing or reporting verb is in the simple past, while the verb in the quoted speech is in the simple present. So यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं? हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूसिंग या फिर जो रिपोर्टिंग वर्ब थी उसे जो है सिंपल पास्ट में लिखा गया, लेकिन जो वर्ब था द कोटेड स्पीच का जो वर्ब था वो सिंपल प्रेजेंट में लिखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, जगत सेड आई स्टडी मैथमेटिक्स इन स्कूल. नाउ हियर the tense of the verb of the reported speech is changed to match the tense of the reporting verb. So यहाँ जो tense होता है verb का, उसे जो in the reported speech उसे जो change किया जाता है किसके according? match करना है उसे with the tense of the reporting verb. तो दोनों को आपस में हमें match करना है. Here now the example becomes Jagat said that he studied mathematics in school. Now the next point is the pronoun of the quoted speech is in the first person. So यहाँ पे जो pronoun है quoted speech का वो first person में है, and in the above example the pronoun is in the first person singular while the speaker is in the third person that is singular. The personal pronoun is changed from the first person singular to the third person. अब लेकिन जब हम indirect speech की बात करते हैं तो यहाँ पे जो पर्सनल प्रोनाउन है वो चेंज हो जाता है थर्ड पर्सन में. सिंगुलर मस्कुलिन फॉलोइंग द रूल ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोनाउन एंड द एंटीसीडेंट. सो प्रोनाउन और एंटीसीडेंट के बीच में जो रूल है उसको फॉलो करता है इन द इनडायरेक्ट स्पीच. नाउ फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. अब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करना है, लेट्स लर्न अबाउट दैट. फर्स्ट इज चेंज ऑफ टेंसेस. टेंस को चेंज करना. कैसे चेंज करना है? व्हेन वी चेंज द नरेशन ऑफ अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच. जब हम जो है नरेशन को चेंज करते हैं, किसी भी सेंटेंस के नरेशन को चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, वी नीड टू चेंज द टेंस ऑफ द वर्ब. हमें क्या करना है? हमें वर्ब के टेंस को भी चेंज करना है. टू द इनडायरेक्ट स्पीच, किसमें कन्वर्ट करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. टू मैच द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को मैच करने के लिए. द फॉलोइंग टेबल शोज हाउ द टेंस ऑफ द वर्ब चेंजेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. तो यहाँ पे टेबल है, इसे हम पढ़ेंगे एंड देन वी विल बी एबल टू चेंज from direct to indirect speech. So here children you can see three columns are made. First is the reporting verb, then verb in indirect speech, and then the examples. So the first is simple present. अब इसमें क्या होता है? Tense remains unchanged. तो यहाँ पे जितने भी tense यहाँ पे simple present, simple future या फिर present perfect, इन तीनों में ही जो tense है that remains unchanged. So let's look at some of the examples of simple present. Jagat says, I love my India. ये direct speech में है. अब इसको हमने indirect में convert किया तो क्या बन जाएगा? Jagat says that he loves his country. Jagat will say, I loved my country, and Jagat will say that he loved his country. So you can see the difference here, children. What is the difference here? Next is Jagat has said, I love my country. Jagat has said that he loves his country. So these are the few of the examples given here. इसे अच्छे से पढ़ना है, समझना है, and then we have to move forward. Next is reporting verb. Verb in indirect speech and example. So यहाँ पे reporting verb क्या है हमारा? Simple past tense. अब verb in indirect speech. Let's see what's written first. Simple present changes to simple past. So जब हम indirect speech की बात करते हैं तो जो simple present होता है वो simple past में convert हो जाता है. जगत said, I love my country. अब यहाँ पे हमने love को कर दिया है loved. तो present बन गया है past. So Jagat said that he loved his country. Next is Jagat said, I am enjoying my holidays. अब यहाँ पे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या हो जाता है? वो
पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाता है. सो आई एम का हो जाएगा he was. So Jagat said that he was enjoying his holidays. Next is present perfect change, जो है change हो जाता है past perfect में. So Jagat said I have finished my work. So have का बन जाएगा यहाँ पे had. So Jagat said that he had finished his work. Next, simple past tense change हो जाता है past perfect tense में. So here the example is Jagat said I enjoyed my holidays. अब यहाँ पे past perfect में convert करें तो बन जाएगा Jagat said that he had enjoyed his holidays. Next is simple present used to express a habitual action or universal truth remains unchanged. So यहाँ पे जब भी किसी universal action ट्रुथ की बात करेंगे या हैबिचुअल एक्शन की बात करेंगे जो चीज कभी चेंज नहीं होती, सो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड. इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया जाता है. फॉर एग्जांपल जगत सेड आई वर्क फॉर द गवर्नमेंट एंड इट इज अ हैबिचुअल एक्शन. सो अब ये क्या बन जाएगा, जगत सेड दैट ही वर्क्स फॉर द गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट. द टीचर सेड that the sun rises in the east. So यहाँ पे हमने verb में हमारे कोई भी चीज नहीं किया है. Now children, here the question is given. Vinod told me the car can be parked in the parking lot. अब इसको हमने convert किया है in the indirect speech. तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, Vinod told me. अब me के बाद हमने लगा दिया है that the car could be parked in the parking lot. Now the second question is the principal will say the discipline has to be maintained. So here we are going to write the principal will say that the discipline has to be maintained. So these are two of the examples, children, that we have done, and the rest of the questions are your homework you have to do on your own. Now changing words denoting time, space and position. So ऐसे words को change करना जो time बताते हैं, space बताते हैं या फिर position बताते हैं, ऐसे words को हमें change करना है. So words that indicate the time, space and position of something change their form when we change direct speech into indirect speech. So ऐसे जो words हैं वो क्या करते हैं, वो अपने form को change कर देते हैं जब उन्हें direct speech से indirect speech में convert किया जाता है. The table shows the changes in the adverbials. ये जो table है ये adverbials के form में it is showing the changes. So here first in the first column we can see the direct speech is given and in the second column indirect speech is given. Ago becomes before, here, there, last becomes previous, next or next day becomes following or following day, now becomes often omitted and then becomes then, this becomes that, these becomes those, today becomes that day, tomorrow becomes the following day or the next day, and day after tomorrow becomes in 2 days time, tonight becomes that night, yesterday becomes the previous day or the day before, and the day before yesterday becomes 2 days before. So these are the changes that we see when we convert from direct speech to indirect speech. Now here children, you have to change the following sentences into indirect speech using appropriate pronouns and adverbials. So जो भी हमने अभी पिछले पेज पे पढ़ा है उन्हें use करना है and you have to solve the exercises given here. So children, first one is done. I am going to explain you that. Savita told the principal, I will not be able to come to school during the next week as I have been advised bed rest for my leg injury. तो सविता यहाँ पे अपने प्रिंसिपल से कुछ कह रही है और क्या कह रही है कि वो स्कूल नहीं आएगी क्योंकि उसके पैर में चोट लगी हुई है. So now we are going to change this direct speech into the indirect one. So अब हम क्या करेंगे, लिखा हमने सविता told the principal. अब प्रिंसिपल के बाद हमने that लगा दिया है.
आई, क्योंकि सविता की बात को हमने बोला था तो अब सविता के लिए हम शी लिखेंगे. दैट शी विल का बन जाएगा वुड नॉट बी एबल टू कम टू स्कूल ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक. अब नेक्स्ट वीक की जगह हमने क्या लिख दिया है, फॉलोइंग वीक, as she has been advised bed rest for her leg injury. So like this children, you have to use the rest of the words that we have learned on the previous page and then complete these exercises given in your book. Now next is change of narration of sentence for sentence types. अब हमें narration को change करना है sentence के type के according. There are some guidelines for changing the narration from direct to indirect speech. So direct speech को indirect speech में convert करने के लिए there are some guidelines according to the type of sentence. Now let's look at the rules for different types of sentences in detail. So here some rules are given. Let's read them. The first one is declarative sentence. So declarative sentence जो कुछ declare करते हैं ऐसे sentence में कैसे हमें change करना है, we are going to read that. You have already learnt in earlier classes how the rules of narration change from declarative sentences. Let's do a quick recapitulation of what we know about these rules. So the first one is the reporting verb set to change into told when it is followed by an object. So हम यहाँ पे reporting word क्या use करते हैं, said use करते हैं. अब उसे change करके हम क्या बना देंगे, told convert कर देंगे उसे told में. कब करेंगे, जब उसके बाद एक object लिखा हुआ है. For example, Dhiman said, अब यहाँ पे क्या लिखा है, to me, तो मुझे कह रहा है. अब यहाँ पे क्या है, to me क्या एक ऑब्जेक्ट है. So Dhiman said to me, I don't know the answer. So अब जब हमने इसे indirect speech में convert किया तो क्या बोलेंगे हम, Dhiman, अब said की जगह यहाँ पे told हो जाएगा क्योंकि ऊपर जो है एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ था. So Dhiman told me that he did not know the answer. The reporting verb said does not change if the verb does not have an object. अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को हम वहां से चेंज नहीं करेंगे, इट विल बी सेम. अब लुक एट द एग्जांपल, Dhiman said I am very happy today. अब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेड को एज इट इज लिख देंगे. सो Dhiman said that he was very happy that day. अब टुडे को हमने क्या कर दिया, that day में कन्वर्ट कर दिया as we have learned. Now the conjunction that is used to join the reported speech with the main और the reporting sentence. Conjunction को use किया जाता है join करने के लिए reported speech में. For example, Dhiman said my favorite color is blue. अब Dhiman said that his favorite color was blue. So यहाँ पे हमने that का use किया है. The sentences, personal pronoun, the tenses, personal pronouns and words denoting time, place and position are changed according to the rules discussed above. तो ऊपर जो भी हमने रूल्स पढ़े हैं इसके अकॉर्डिंग इन्हें चेंज किया जाता है. The following verbs can also be used to replace the reporting verbs said in the indirect speech. अब जो नीचे कुछ verbs दिए गए इनको भी चेंज किया जाता है accordingly in the indirect speech. Admit, answer, argue, assure plus object. Boast, claim, clarify, complain, declare, deny, explain, express, guess, indicate, insist, mention, object, observe, plead, point out, promise, protest, remark, remind plus object, reply, report, request, submit and urge. So these are some of the words we have to keep in mind. Now, use of infinitives in indirect speech. So indirect speech में we are going to learn about some infinitives. We sometimes use the following combination to replace the reporting verb say in indirect speech. So say को हम जो है indirect speech में कैसे convert करते हैं, let's see. We use say की जगह हम use करते हैं agree, offer, promise, threaten plus the infinitive. For example, Vineet told Geeta, I will wait for you till you finish your work. So अब इसको जब हमने indirect में convert किया तो क्या हो जाएगा, विनीत agreed to wait for गीता. अभी विनीत ने बोला था
कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा जब तक तुम अपना वर्क फिनिश नहीं कर लेते। तो क्या हो रहा है, विनीत क्या हो रहा है, अग्री हो रहा है। सो विनीत अग्री टू वेट फॉर गीता till she finishes her work. So this is the sentence that we have made. Next is Rita said I will not cook. अब Rita refused to cook, क्योंकि यहाँ पे not का यूज हो रहा है, I will not cook, मैं नहीं करूंगी, तो इसका मतलब वो refuse कर रही है. So here we have written Rita refused to cook. So these are some of the examples, children. Now after reading the examples, we have to change the narration of the following declarative sentences from direct speech to indirect speech. So declarative sentence दिए गए हैं, इनको हमें direct से indirect speech में convert करना है. She said to me, if you lend me your dictionary, I'll return it to you by tomorrow. So उसने मुझसे कहा कि अगर तुम मुझे अपनी डिक्शनरी दोगे तो मैं तुम्हें कल तक वापस कर दूंगी. So अब यहाँ पर to me लिखा हुआ है, तो उसकी जगह हम लिखेंगे told. She told me that if you की जगह हो जाएगा I lend her my dictionary, she would return it by the next day. The English teacher said I shall conduct a few tutorial sessions for the students whose grammar is weak. So अब यहाँ पे said की जगह आ जाएगा told. The English teacher told the principal that she will conduct a few tutorial sessions for the students whose grammar is weak. So children, like we have done the 2 questions here, the rest of the questions are your homework, you have to do on your own. Now the next topic that we are going to learn is from indirect to direct speech. अभी तक हमने पढ़ा कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं. अब हम पढ़ेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच को हम डायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे. So while changing the narration from the indirect to direct, the points that we have to remember is the word say, said is most commonly used as the reporting verb. So say या फिर said word हम कभी लिखते हैं, हम reported speech में लिखते हैं. The conjunction used to link the reporting sentence to the reported speech is removed. So ऐसे conjunction जो use होते हैं इसमें in the reported speech, उन्हें जो हमें हटा देना है. It is placed with a comma followed by inverted comma. अब जब हम direct speech में कर रहे हैं तो हमें comma और inverted commas लगाना है, उसके बाद हमें उस person की बात को लिखना है. Here the example is given. Rita told me that she would help me with my homework. So उसने बोला था रीता ने कि वो मेरा वर्क में हेल्प करेगी. अब यहाँ पे देखो that लिखा गया है, तो that को हमें हटाना है और told का बन जाएगा said, me का बन जाएगा I. Rita said I shall help you with your homework. So here children we have converted this indirect speech into the direct speech. The tense of the reported speech is changed here if required. The pronoun, possessive adjectives and adverbials in the reported speech are also changed appropriately. Here the example is he said that he wanted to give his books to Rajan that day. So यहाँ पे we can see he is the pronoun and wanted is the verb. His is the possessive adjective and that day is the adverbial used here. अब इसे हमने कन्वर्ट किया है in the direct speech. कैसे कन्वर्ट किया है? So he said, अब that हट जाएगा, he का बन जाएगा I wanted का बन जाएगा want, I want to give, his का बन जाएगा my book to Rajan, that day की जगह बन जाएगा today means आज. So like this we have changed the sentence. Now in the above example, while changing the narration from indirect speech to direct speech, the conjunction that is removed and a comma is used to separate the reporting speech from the reported sentence from the reporting speech. So अब यहाँ पे हमने ये बता रहा है कि जो यहाँ पे that था उसे हटा के हमने उसके यहाँ पे comma लगा दिया है और inverted commas open कर दिए. The reported speech is put within inverted commas. So reported speech को हमेशा हम inverted comma के अंदर लिखते हैं. The verb of the reported speech is changed from simple past to simple present tense.
सो सिंपल पास्ट से हमने इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है वर्ब को. द थर्ड पर्सन सिंगुलर मास्कुलिन पर्सनल प्रोनाउन ही इज चेंज इनटू द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन आई. अब यहाँ पे हिज को हमने माई में चेंज कर दिया है. द पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज इज चेंज टू माई एंड द एडवर्बियल्स दैट डे इज चेंज इनटू टुडे. सो यहाँ पे चिल्ड्रन यहाँ पे जो नोट लिखा है वो ये बता रहा है कि ऊपर जो हमने एग्जाम्पल को चेंज किया है उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसे हमने कवर किया है, जिसे देखा, उसके बाद हमने ये जो चेंजेस किए गए हैं उन्हें किया है. नाउ चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट. सो यहाँ पे सेंटेंस दिए हैं उन्हें हमें इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है. सो दिशा टोल्ड हर मदर that she wants to be an astronaut in the future. तो दिशा ने अपनी मदर से बोला कि वो फ्यूचर में एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है. Now this is in the indirect speech, जिसे हमें डायरेक्ट में करना है. So children यहाँ पे दिशा टोल्ड की जगह हो जाएगा said to her mother. हमने ब्रैकेट में कर दिया है क्योंकि यहाँ आपने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए. So here we have converted told to said and bracket में लिख दिया to her mother. Now the comma is there and inverted comma. हर मदर की जगह आपने लिखा हर मदर तो आपने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है. that को हटा दिया हमने. she की जगह बन गया I. wanted becomes want. I want to be an astronaut in the future and inverted comma close. So this is how we have converted the indirect speech into the direct speech. So children, like we have done the first one, like that, you have to complete the rest of the exercise that is given to you. Now the next topic is interrogative sentences. Here are the rules for changing interrogative sentences from direct to indirect speech. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. द रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज चेंज टू आस्क और एनक्वायर. सो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है उससे जो है सेड को जो है चेंज करना है टू आस्क. आस्क में चेंज करना है या फिर एनक्वायर्ड में से चेंज करना है. द कंजंक्शन if or whether is used when the interrogative sentences is yes or no. अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस जो yes no वाले हैं तो उसमें हमें क्या करना है, whether या फिर if को हमें जो है यूज करना है. Here the example is given children. Rinki said can I come with you. So डायरेक्ट स्पीच में है, अब हम इसे इनडायरेक्ट में कर रहे हैं. So Rinki said की जगह हो गया ask क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही है. क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन पूछ रही है. Rinki asked me whether she can come with me. So यहाँ से हमें जो है ask या फिर inquired लेना है और नीचे से if या फिर whether लेना है. So Rinki asked me whether she can come with me. So you का बन गया यहाँ पे me. Some other verbs such as wonder, wanted to know, enquire and demand can also be used to replace the reporting verb say, said in the direct speech. The above sentences can also be written as followed in indirect speech. So here the sentence that we have done in the previous example, वो sentence यहाँ पे वापस लिखा हुआ है. Rinki wanted to know whether she could come with me. Rinki wondered whether she could come with me. Rinki inquired whether she could come with me. So these are the also ways in which we can write down the above sentence. Now children, our note is given. Enquire and demand can be used in indirect speech only. So enquire word और जो demand word है इन दोनों को सिर्फ हमें indirect speech में ही use करना है. Only if the introducing of reported verb has an object. So अगर जो आपका reported verb है उसमें object है तभी हमें इन words को use करना है. The preposition of follows verb such as inquire and demand. So जो preposition है कौन सा preposition of, ये क्या करता है इन दोनों को follow करता है, इनके बाद ये आता है. Want to know can be used in indirect speech.
only if the introducing or reporting verb does not have an object. So अगर introducing या reporting verb में object नहीं है तो हमें क्या use करना है? We can use want to know. The interrogative form of the reported speech is made into the assertive form in indirect. So जो interrogative form होता है reported speech का उससे हम क्या करते हैं? Assertive form में change कर देते हैं in the indirect speech, as in the above example. The inverted position of the subject and the verb in the interrogative sentences is changed into its regular form. That is subject followed by the verb. So inverted position जो होता है subject का या फिर verb का in the interrogative sentence में वो change हो जाता है अपने regular form में. No interrogation mark is used at the end of the sentence in indirect speech. So जब हम क्वेश्चन को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कोई भी हम इंटरोगेशन मार्क नहीं लगाते, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं. No conjunction is used if the interrogative sentence in the reported speech begin with the WH word. So अगर क्वेश्चन जो भी हमारा पूछा गया है डायरेक्ट स्पीच में है इसमें अगर WH वर्ड से मीन्स WH वर्ड से अगर वो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हमें कंजंक्शन यहाँ पे यूज नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रेंजर सेड व्हाई इजंट एनीवन हियर. अब यहाँ पे WH वर्ड यूज किया गया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? कंजंक्शन को यूज नहीं करेंगे. द स्ट्रेंजर वांटेड टू नो व्हाई नो वन वाज देयर. सो दिस इज हाउ वी हैव टू चेंज इनटू इंटरोगेटिव sentences. So now change the narration of the following sentences according to the instructions given in the bracket. So bracket में लिखा हुआ है कि किस में change करना है. Accordingly we have to change. So here the first question is, I asked my brother, have you finished your homework? मैंने अपने brother से पूछा क्या तुमने अपना homework finish कर लिया है? Indirect speech में इसे हमें convert करना है. So क्या हो गया? क्या आएगा आंसर? I asked my brother if he had finished his homework. So this is one of the example, children. Like this, you have to do the rest of the work. Here too, here is said, diya hua hai, so Jatin told will come here. So you have to complete this given exercise, children. Now here, the next point is imperative sentences. The rule for changing the narration of imperative sentence from direct to indirect. So imperative sentences को direct से indirect में कैसे change करना है? We are going to read about that. The reporting verb said can be changed to requested, ordered, wanted, advised, suggested, urged, warned, begged, commanded, forbid it, reminded, invited and instructed. So जो भी reporting verbs है इन्हें इन form में हम change कर सकते हैं. The finite verb in the reported speech is made into an infinitive. So यहाँ पे जो finite verb use होता है उसे हम infinitive में change कर सकते हैं. No conjunction is used here. अब इसमें conjunction को use हम नहीं करते. For example, my mother said to me, switch the lights off. ये direct speech में है. So अब यहाँ पे मम्मी हमसे कुछ कह रही है तो वो क्या करें? Order दे रही हैं. So my mother ordered me to switch the lights off. The teacher said to us, answer these questions quickly. अब टीचर हमें क्या कर रही हैं? एडवाइस दे रही हैं कि इन क्वेश्चन के आंसर क्विकली देना है, जल्दी देना है. The teacher advised to answer these questions quickly. So these are two of the examples, children. On the basis of the given examples, we have to complete this exercise. Here we have to change these into the questions that is given here. The question is given in the bracket, we have to change in that. So first one है, the old lady said to Rishiv, please help me cross the road. अब ये indirect speech में हमें change करना है. So अब यहाँ पे वो request कर रही है. Old lady क्या कर रही है? Request कर रही है. The old lady requested Rishiv to help her cross the road. अब same आपको यहाँ पे indirect में दिया गया है. You have to change this into direct one. So children, as we have done the first rest questions are your homework, you have to do on your own. The next is exclamatory sentences and wishes.
Exclamatory sentence क्या है, wishes क्या है, we are going to read. The rules for changing the narration of exclamatory sentence from direct to indirect speech are as follows. So यहाँ पे हम सीखेंगे exclamatory sentence को कैसे हमें direct speech में से indirect speech में change करना है. The reporting verb said can be changed to blessed, cried, exclaimed, prayed, wished. So यहाँ पे जो reporting verb है उन्हें हमें change करना है. The exclamatory form of the reported speech is made into the assertive form before changing the sentence into the indirect speech. So जो भी exclamatory form होता है उसे हम सबसे पहले assertive form में convert करते हैं, उसके बाद हम इसे indirect speech में convert करते हैं. Exclamatory words और words denoting strong emotion. Exclamatory words या ऐसे words जो strong emotions के बारे में बताते हैं, such as alas, hooray, oh are omitted in the indirect speech. So ऐसे exclamatory words जो हैं, जो interjections हैं, उन्हें हम indirect speech में जब हम convert करते हैं तो इन्हें नहीं लिखते. However, the emotions expressed thus are communicated by using phrases such as exclaimed with joy, exclaimed with sorrow and so on. So इनके जगह पे हम क्या words लिखते हैं, ये लिखते हैं exclaimed with joy, exclaimed with sorrow. No exclamation mark is used at the end of the sentence in indirect speech. So जब हम exclamatory sentence को direct से indirect में convert करते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई भी exclamation mark use नहीं करते हैं. Here the example is given. The captain said, "Hooray! Our team won the trophy." So अब यहाँ पे जो है captain is very very happy. तो अब captain क्या कर रहा है, exclaim कर रहा है. The captain exclaimed with joy that the team won the trophy. Again, the next sentence is, the priest said to the couple, "May you be blessed with eternal happiness." अब इसे हमने indirect में convert किया. The priest means पुजारी, वो क्या कर रहा है, bless कर रहा है couple को. The priest blessed the couple with eternal happiness. So these are two of the example, children. And now we have to complete this exercise. Here we have to change the narration of the following sentences according to the instructions given in the bracket. So bracket में instructions दिए हैं, उनके according हमें इन्हें convert करना है. Zabran exclaimed with sorrow that he had lost his key. अब इसे जो direct speech में convert करना है. Zabran said, "Oh no, I have lost my keys." अब keys खो गए तो वो sad feel कर रहा है, sorrow feel कर रहा है, तो इसने यहाँ पे वो oh no use किया है. Our teacher said, "Alas, the great leader is no more." अब इसे आपको indirect speech में convert करना है. So as we have done the first one, rest questions are your homework, you have to do on your own. Now let's do more. Here we have to change the following direct speech sentences into indirect speech. So यहाँ direct speech में कुछ sentence दिए गए हैं, इन्हें indirect में convert करना है. So let's see the first example here. The inspector said to the attendant, "Call all of them at once." So inspector ने attendant से बोला कि सबको एक साथ वहां पे बुला लो. The inspector, अब inspector क्या कर रहा है, order दे रहा है. The inspector ordered the attendant to call all of them at once. So children, जैसे हमने first किया है ऐसे ही आपको rest of the questions करने हैं. You have to do them on your own. Now change to direct speech. अब ये indirect speech में दिए गए हैं. You have to change these sentences into the direct speech. He proposed to us that we should go to the zoo. So अब जो है एक बच्चा है, उसने बाकियों से कहा है कि let's go to the zoo. So you have to change all these sentences in the direct speech, and it's your homework. Here also you have to change the following sentences into the indirect speech. अब वहाँ पे तो हमने अभी direct में convert किया था. In this exercise you have to convert into the indirect speech. So as we have learned a lot in this chapter, I think you can do it very well. So by this, children, we have completed the chapter. I hope that you have understood it. And if you have any queries related to the chapter, you can ask me in the comments. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay tuned.